हेलो एवरीवन। आपने पहले हमारा वीडियोस में देखे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या क्या है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसका नेचर क्या है, कैसे पता चलेगा, वैल्यूज नहीं उसका नेचर। तो इसके लिए देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, and the quadratic formula is x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac whole upon 2a, where you have to remember a is not equal to 0 and the coefficients a, b, c of the quadratic equation are real. तो आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा. Okay, now this term under the square root, that is b square minus 4ac, is called discriminant, and it is represented by the symbol delta or d. And the thing is that the nature of the roots depends on the value of discriminant. तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है उसी का ऊपर डिपेंड करके आपका रूट्स का नेचर आपको पता चलेगा. इसमें आपको 3 केसेस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, केस ए, वेयर इफ डी is negative, that is discriminant is negative, the roots are imaginary and in complex pair. अगर d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है तो आपको कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. रूट्स जो मिलेंगे वो इमेजिनरी होंगे और वो कॉम्प्लेक्स पेयर मतलब कंजुगेट पेयर में होंगे. ओके. सेकंड केस, इफ d is positive, the roots are real and unequal. अगर g का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और वो अनइक्वल होंगे. एंड थर्ड केस, केस सी, इफ d is equal to 0, the roots are real and equal. सो d पॉजिटिव और 0 होने से क्या हो रहा है, रियल हो रहा है. लेकिन d अगर 0 होता है वैल्यू, देन द रूट्स आर इक्वल. नाउ we get two more scenarios or situations in case of b, जहाँ पे d पॉजिटिव होता है. सिनारियो 1 इज इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, देन द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल. रिमेंबर, द रूट्स आर रैशनल if d is a perfect square. And if d is not a perfect square, then the roots are of course real, but they are irrational, and the irrational roots will be in conjugate pair. Okay, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, उससे आपको बेटर पता चलेगा. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू कंपेयर द स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर आप कंपेयर करो, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. व्हाट वी गेट, a is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 5. So the value of discriminant, by putting the values of a, b, c, what do we get, b square minus 4ac, so it's minus 7 whole square minus 4 in 4 times 2 times 5, that is equal to minus 7 whole square is equal to 49 minus 4 times 2 times 5 is equal to 40. So it's 49 minus 40 is equal to 9, which is a perfect square because 9 is equal to 3 whole square. Hence, as the value of discriminant is positive and perfect square, so we can say the roots of the above quadratic equation are real, rational and unequal. Remember case B and scenario 1. Okay, so क्या सही में ये क्या डिस्क्रिमिनेंट से हमें से पता चला? Let us find the actual values of the roots. So will use the quadratic formula, that is x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac whole upon 2a. Putting the values of a b c, आपको जो values a b c का मिला है ऊपर में, simplify करो. minus of minus 7 plus minus root of b square minus 4ac का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, that is 9 or 3 whole square. So we wrote 3 whole square and whole upon 2 times 2 because value of a is 2. So we get 7 plus minus 3 by 4. Hence we'll get two values, where if we take the plus value
of 3, we'll get x equal to 7 plus 3 upon 4, that is equal to 10 upon 4, which is equal to 5 upon 2, okay, by simplification. And if we take the negative value of 3, then we get x equal to 7 minus 3 upon 4 is equal to 4 upon 4 equal to 1. So we got two roots, or the two solutions of the quadratic equation, values of two values of x, that is 5 upon 2 and 1. Both are real, both are rational, and they are not unequal. So the nature of roots, actually what we said, understanding the value of discriminant matches. So the roots are real, rational and unequal. So इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो किस तरह का होगा वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड फॉर योर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. वी हैव गिवन एग्जाम्पल टू सॉल्व where the quadratic equation given is x square plus 6x minus 7 is equal to 0. And I've given three options to find out the nature of roots: A rational, B irrational, C imaginary. Write your answer in comment. And to learn more, subscribe to our channel. आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज यहाँ पे मिलते रहेंगे. थैंक यू.